ठीक है, प्रेशर क्या होता है? You should know that pressure in physics is defined as force per unit area. Here the force acts at right angles to the area. You can remember that. The force is, this is the force, this is the cross-sectional area. जितने भी area पे act कर रही है, right? ठीक है? So force is at right angles to the area, right? The force is at right angles to the cross-sectional area. ठीक है जी, you can write pressure as force divided by area. You should know that the force here is in newtons, area is in meters square. So SI units for pressure are what? SI units for pressure or Pascal, PA. And you should know that 1 Pascal is equal to 1 Newton per meter square. 1 Pascal is equal to 1 Newton per meter square. If you have a sole of a shoe which is of 200 centimeters square, the mass of a person is 50 kilograms, for example. Generally, you calculate the pressure exerted. There is a shoe here, which is of sole 200 centimeters square, right? And the mass is 50 kilograms. So what is the pressure? On the other hand, there's a heel, right? Heel is of 2 centimeters square, and the mass is the same, which is 50 kilograms. So you have to find the pressure in both cases. Yeah, the first one is you convert, okay, 1 centimeter is precisely 1/100 meters, right? You know this. So 1 centimeter square का मतलब क्या है? 1/100 times 1/100 meters, ठीक है? So this is basically 10 raised to power minus 4 meters square. 1 centimeter square is 10 raised to power minus 4 meters square. Remember that. तो आपने क्या करना है? आपने प्रेशर निकालना है. प्रेशर is force over area. फोर्स को आप कन्वर्ट करेंगे वेट में. वेट इज mg. This is the mass. So that is the weight over area, which is mg over area. Now the mass is 50. The gravitational field strength is 9.8 on Earth. Area is 200 multiplied by 10 raised to power minus 4. So once you do the maths, the answer is approximately equivalent to 25,000 Pascal. यहाँ पे भी आप प्रेशर निकाल रहे हैं. हील का प्रेशर अगर आप निकालें तो प्रेशर इज फोर्स ओवर एरिया. तो फोर्स कितनी है? दैट इज mg over a. So mass is 50, g is 9.8, area is precisely 2 centimeters square. तो आप 2 को कन्वर्ट करेंगे मीटर स्क्वायर में, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 4 कर देंगे. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे प्रेशर बहुत ज्यादा आ रहा है. दैट इज 2.5 into 10 raised to power 6 Pascal. ठीक है. So the heel will exert a greater pressure on the earth as compared to a simple sole shoe जो होता है, right? So this gives us the information that if the area is less for the same weight, ठीक है, for the same force, the pressure
is more. Remember that. Is that clear? Okay. Next thing that we have is the atmospheric pressure. You know that atmospheric pressure is everywhere, right? Let's say you have an intact tin can which is filled with air. This tin can will remain intact because the reason is that the pressure that is exerting outside is equivalent to the pressure which is inside. So nothing would happen to its shape and it will remain intact. However, if you remove air from this tin can, what's going to happen? आप लोगों ने कभी पेप्सी टिन कैन पिया हो 7 अप वगैरह का और उसमें से एयर निकाल दें तो वो क्रश हो जाता है इनवर्ड्स. इट वुड बी समथिंग लाइक दिस. ठीक है, ये देखिए बिल्कुल क्रश हो जाता है. सर वो उसकी एक वजह. एक्सपेरिमेंट भी तो होता है, वो गर्म पानी में रख के इस तरह करते हैं, निकालते हैं तो वो इससे क्रैश हो जाता हाँ जी बिल्कुल. असल में बेसिकली हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, हम इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं. हम इसके अंदर एयर रिमूव कर रहे हैं, तो व्हेन एयर इज रिमूव्ड सो इट क्रशेस बाय ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. So there is some air pressure outside, and what happens is that atmospheric pressure causes the can to crumble all the way. ठीक है, is that clear? इसी तरह से आप लोगों ने रबर प्लंजर्स देखे होंगे आजकल. जो बच्चों के टूथब्रशेस भी आते हैं, वो आप देखेंगे कि वो वॉल के साथ आप उसको अटैच करें तो वो अटैच हो जाते हैं. उसकी वजह ये है कि ये जो चीज होती है इस तरह से, ये प्लंजर जो होता है इट्स लाइक दिस. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव हेयर समथिंग लाइक दिस. मैं इसको बनाता हूँ. दो प्लंजर्स आपके पास हैं, एक प्लंजर ये है और एक प्लंजर को आपने इसके साथ दोबारा ज्वाइन कर लिया इस तरह. ठीक है, दो प्लंजर्स आपने ज्वाइन कर दिए. अब इनको सेपरेट करना बहुत इम्पॉसिबल हो जाएगा क्योंकि इतना ज्यादा प्रेशर है आउटसाइड. इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू यू नो रिमूव दीज टू प्लंजर्स, राइट? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ठीक है. ठीक है, सो व्हाट हैपेंस इज दैट, और इसी तरह से ये जो टूथब्रशेस होते हैं उन पे भी ये टूथब्रश होता है लाइक दिस. यहाँ पे ये प्लंजर लगा होता है तो वो अटैच हो जाता है वॉल के साथ और उसको उतारना मुश्किल हो जाता है, राइट? सो व्हाट हैपेंस इज दैट इनसाइड the plungers, ठीक है, vacuum has been established. Are you getting what I'm saying? Right? It becomes difficult to pull the plungers apart because of the outside atmospheric pressure. There is so much pressure outside that it becomes difficult to. So this is a toothbrush here, and you see that this is a wall here, and it has been attached with a wall. ठीक है, इसको आप उतार सकते हैं और यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो गया. ठीक है, वैक्यूम हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, सो देयर इज सो मच एयर प्रेशर आउटसाइड. ठीक है, मेरे जो बेटे हैं उनके तो ब्रशेस हैं तो वो वॉल के साथ अटैच हो जाते हैं, तो उसमें यही कॉन्सेप्ट यूज होता है. अच्छा, देन वी हैव अनदर थिंग दैट यू शुड नो. we can have the wall of a container. So there is a container here. It can be any container. This is the wall that we have, right? So this is the wall of a container. And what happens is that there is some force which is acting like this. This is the force. This is because of the molecules of the air which bombard the walls of the container. So you see that these are the molecules of air which are striking here. ठीक है, ये जो साइडवेज भी होते हैं उनका परपेंडिकुलर कंपोनेंट आप यूज करते हैं फोर्स के लिए. आपको वो अगर क्वेश्चन में पूछेगा तो
राइट एंगल्स पे देगा वो, ठीक है। सो दिस इज द फोर्स बाय द ड्यू टू द collisions of molecules of air, and it is exerted on a certain area, right? There is some cross-sectional area. Okay. So what's happening is that these molecules of air are exerting a force on the wall of the container, right? And you should know that this force is exerted on a certain area, right? And since pressure is equal to force over area, you should know by all means that atmospheric pressure is due to bombardment, or you can say collisions of air molecules with the walls of the container. Collision of air molecules with the walls of the container. You must be aware of the fact that the atmospheric pressure at sea level has a value of what? It's 1.01 into 10 raised to power 5 Pascal. Okay, P is for the Pascal, right? We sometimes also call it 1 ATM or 1 atmosphere. इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बहुत फायदे हैं। आपके पास अगर कोई कंटेनर है और उसमें से आपने लिक्विड को प्लंज करना है, किसी पुल अप करना है किसी सिरिंज के अंदर, लेट्स से देयर इज अ सिरिंज, तो atmospheric pressure can help that, right? So basically this is a syringe, for example, like this. So what's going to happen is that the atmospheric pressure will cause the liquid to go up here in the syringe. This is the atmospheric pressure. Similarly, ये समझ आ रही है बात? The atmospheric pressure will cause the air, it will create a pressure difference and will cause the liquid to go, and it would be something like this, right? Then we have something of this sort. If someone is drinking from a straw, the atmospheric pressure will cause the liquid to go up the straw, creating a pressure difference, right? Straw में if someone is drinking any liquid, तो क्या होता है, वो pressure difference create होता है, और यहाँ atmospheric pressure क्या करता है, cause करता है liquid को straw के अंदर, ठीक है? You pull up the straw and the liquid goes here, right? Okay, this is the straw that we have. तो ये आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कुछ एडवांटेजेस हैं। अब हम बात करते हैं प्रेशर इन लिक्विड्स के बारे में। लेट्स से वी हैव अ कंटेनर लाइक दिस which is filled with liquid. Let's say this is filled with liquid all the way, and we make these 3 holes here in this container. You'll see that the pressure is something of this sort. ये यहाँ से पानी इस तरह से गिरेगा, यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा थोड़ा, और ग्रेटेस्ट डेप्थ पे प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। So this shows the important characteristics that the pressure increases with the depth of the liquid column, right? Here you can see that this is height H1. Okay, this is depth H1. Then you have this depth here. This is H2. And then you have another depth here, which is this one, which is H3. So you see that the pressure increases with the depth of the liquid column. Always remember, देखें ये शुरू से ऊपर से आपने डेप्थ को कंसीडर करना, ये काफी क्वेश्चंस में आता है।
And if you write the formula for the pressure is rho GH, where this is the pressure in Pascal. Okay, this is the density of the liquid. Whatever liquid you're using in kilogram per meter cube. This is the gravitational field strength or gravitational acceleration. In Newton per kg. This H is what? This is the depth of the liquid in meter cube. So pressure is precisely what it is. Rho G delta H, right? Is that clear? And we'll talk about delta H because that is the change. So you will write here P is equal to rho G delta H. H असल में हमेशा डिफरेंस इन हाइट होता है. आप किसी भी दो जगह के दरमियान अगर चेंज इन प्रेशर निकालना चाहते हैं तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. ठीक है. चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू रो जी इंटू चेंज इन हाइट. इज दैट क्लियर? असल में दो पॉइंट्स के दरमियान अगर आपने ये आपके पास एक लिक्विड कॉलम है, ठीक है, और आपको प्रेशर चाहिए इस पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान, तो आप इन दोनों हाइट का डिफरेंस, अगर आपको ये उन्होंने ऊपर वाली हाइट दी हुई है h1 और ये वाली हाइट दी हुई है h2, तो चेंज इन हाइट क्या होगी? डेल्टा h. ऐसा ही है. तो डेल्टा h जो है वो आपके पास ए और बी के दरमियान हाइट है. तो आप ए और बी के दरमियान जितना भी प्रेशर है वो आप ऐसे निकाल लेंगे, रो जी डेल्टा h.